Through this video, I can relate easily. When I came last year, I took my first class. Similar happens to me also. So I can easily connect. So what I did is, according to their comfort zone, what student likes, according to their comfort zone or naughtiness or whatever they are commenting, that I followed. Then from the next day, according to their questions and abilities, I started to teach. I gave opportunity to come front and speak. After that, I made easy that what topic I teach SSC. To that topic, I gave different examples and in reality ways. Then they also spoke according to that ability. So through this, I gave that spark to the children. So we can power. We can give the power or courage to speak and to come front, so that they can learn easily and creativity. They cannot lose their talent also, and they can power. Thank you, ma'am. Actually, in this video, the teacher has nothing to see, only give spaces among the students. Spaces means what? Not just friendly. Spaces means what the students want, what they need, according to their own concept. She had done all these things in the video. Now, one sir has told me that through the academic year we have to finish the syllabus within the shortest span of time. It's challenging, but according when we go through the CBSE curriculum, each segment of your unit or your chapter or your particular context is divided into specific periods. Suppose that you are taking mathematics unit 1. So for unit 1 there are some specific periods. And if you prepare your own periods according to the framework given by the CBSE, I think you will not suffer that within that span of time I have to finish. How can I manage these things to the other activity from no? It can be done, because the purpose is what? Purpose is that only access the students what you want to do. That is the main purpose. That is the form of the assessment. Example is what? It is just like of assessment. So for that assessment, what we need? We need to have the learning outcomes, the learning things which inculcate the minds of the student. That is our purpose. Okay? Next. Now, let us see multiple assessment. We can add assessment in the different multiple tasks also. First is concept map, quiz, projects, seminar, recitation or reading, role play, presentation, carousel, brainstorming, model making, worksheet, exit cards, debate, speech, listening task, declaration, GD, enacting an advertisement or that. So many activities are there. You can prepare your outcomes through these activities and make your own classroom materials in the form of these lists. Also, you can have some group discussion part, you can have some projects part, you can indulge 2 to 4 or 5 students in one activity group, and then you can have your mindset among the students, what exactly you want to convey in the minds of the students. That is our purpose. So we can coordinate. Don't bother about the traditional thing. Just simply go to the class, open the chapter, read the text, explain the text, write the different words, make the question. No. That is totally different from the NAP 2020. NAP 2020, you have to inculcate the real things in the mind of the students, and just you can only coordinate with these terms through the activity part, through the project part, through the role coding, through the group work, and other projects part. Only you can do. So for that, just you have to inculcate in your mind that don't follow the traditional pattern. We have to follow this unique pattern made in NAP 2020, and then you will see that after getting these all changes, you can mindset, the newly concept,
with your mind of the students. That is the reality for that. Next. Smart. What is smart? Specific, measurable, attainable, relevant, and time bound. That is the means of the smart. When we can have the smart student, these qualities in having the specific, the measurable, the attainable, the relevant, and time bound, then we can do the smart work. So, what are learning outcomes? Specific, achievable, timely, measurable, and realistic. You can correlate with that also. First is specific, secondly achievable, third is timely, fourth is measurable, and fifth is realistic. These all things having the smart edge. Next. So, LAAR, cycle of assessment. Last cycle, you can say first is what are the expected learning outcomes after finishing your class, after finishing your chapters. The first thing is what is the expected learning outcomes through the class. Second is reflective part practicals. Third is teaching learning strategy, it means activity, and fourth is assessment. When you follow the last cycle, in the process of assessment, you will get successful through the outcomes, whatever you prepare for the classroom. If you will indulge in all four sections in your assessment, last assessment, your effective learning outcomes and your teaching will be effective with fruitful sections. Next. Expected learning outcomes, activity, reflection, and assessment. Just tell me write down one example that what do we follow in learning outcomes, what will you do for the activity, what are your reflection, and what is your assessment. Write down one activity. Individual. What do you follow for preparing the last activity for the assessment? Please write down. Individual. And for this, I am giving you only 5 minutes. 5 minutes you have to prepare one activity.
Are we ready? Right. Are you ready? Wait, take first. Yes. Yes. Learning outcomes. Yes, sir. I have taken my students in the playground and I was teaching how to throw the javelin. I have given task to 5 students to project that javelin in different angles. 50-degree angle, 30-degree angle, 45-degree angle, 60-degree and 90-degree. And I told, find out, now change that one. And after it, check the distance, how long you have thrown that javelin. Time will come, we can measure the projectile angle. 30 degree is maximum distance. So, students come to know if I will project that javelin on 30-degree angle, it will go long distance. It's the learning outcome. Good. Very good. Next, come even second. Next, everybody. And last one, please. Why? No study simply saying no, sir. You are a teacher. You man last. Say something. What do you have prepared for that? Huh? Why? You didn't get what I am asking? Did you get or not? Why? I don't ask the question and I don't get it. You simply are sitting here. And it makes physical your capacity. Anything physical to strength of the control. That is the talk about sense. That is anyways. Why don't you ask the question that I am not telling you? You have to learn in one class 3 different things: numbers, countings, Sunday, Monday, and other courses. How can you manage in one period all the courses? So let's think about that and go over this. In one class, you have to learn the 4 segments: Sunday, Monday, name of the days, counting numbers, Tuesday, and okay. Think about that. How can you manage in 4 sections? For that, yes. How is that?
सब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ मैं आपकी क्यूरियोसिटी। मैंने कहा कि एक ही सेगमेंट में आपको तीनों पढ़ाना, आपने अलग अलग कराया। सबसे इसका बेस्ट मेथड है, हम 7 बच्चों को बाहर निकालेंगे। एक का नाम संडे, दूसरे का नाम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। बेटा संडे आप आया में कितने एप्पल खाया? तो 4 एप्पल खाया। 4 मींस 4 काउंटिंग। तो इस तरह की एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जब कराएंगे ना तो बच्चे पूरा इंटरेक्ट होंगे। अदरवाइज रोट लर्निंग अभी तक क्या हो रहा है कि हम लोग सीधा rote learning, we are just only focusing on rote learning, that is statistical pattern. No, further that part, just you have to inculcate the minds of the students, like what they need, what they want. भले उसका पेपर प्ले के मत ले लेकिन बेटा 4 एप्पल खाया, एप्पल का नाम सुनते ही वो खुश हो जाएगा। और नर्सरी मतलब पीआरटी टीचर्स का तो पूरा एक्टिविटी लर्निंग ही है। अगर एक्टिविटी नहीं करा रहे हैं तो आप टीचर नहीं है, ना आप स्टूडेंट्स को ठीक से करा सकते हैं और ना एक अच्छे इफेक्टिव टीचर बन सकते हैं। तो थोड़ा सा इन्हें जैसे अभी मैं करा रही थी तो लोग शर्मा करके पूरा खुल करके, आप ओपन जब तक ओपन हार्ट में नहीं है आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हम शर्मा रहे हैं। जब आप ही शर्माएंगे तो बच्चों को कैसे एक्टिव तो फ्री होकर करिए। जैसे मैं एक लोग गेम कराने वाला हूँ, 5 फीमेल और 5 मेल आनी मेरे पास, 5 मेल और 5 फीमेल फिक्स बिना कहे नया पढ़िए, पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़े। आप नहीं आप 5 मेल और 5 फीमेल लाइन में खड़े रहे प्लीज प्लीज सर प्लीज। अच्छा एक्टिविटी है, माइंड गेम है थोड़ा सा, कोई नहीं बात चाहिए। आप लोग देख रहे हैं बस कुछ नहीं, आपको काउंटिंग सिखाना है। बस काउंटिंग सिखाते हुए आपको कैसे इंटरेस्ट के साथ मजा आए उसके लिए मैं कर रहा हूँ। ओके चलिए, काउंटिंग आपको करना है सिर्फ जैसे बताऊंगा मैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको बोलना है 1, आपको बोलना है 2, आपको बोलना है 3, आपको बोलना है 4, आपको बोलना है 5, आपको 6, 7, 8, 9, 10। ध्यान है आपका काम मेमोराइज हो गया। अब हम इसको फास्ट करेंगे, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो गेम से आउट हो जाएगा। पहले स्लो फिर फास्ट, उसके बाद सीट भी चेंज होगा, जगह भी चेंज रहने की रख लिए है। हमारे पास आते हैं तो साथे ना ना करेंगे, थोड़ा चेंज नहीं करेंगे। रेडी? गेम्स बन गया ना? अगर आपका जो डिजिट दिया हुआ है नहीं कर पाएंगे तो आउट हो जाएंगे। फास्ट ही करना है। रेडी? यस 1 2 3 आउट हो गया। चलिए एक चांस 1 चांस। ओके रेडी? यस रेडी? यस उधर फास्ट है, फास्ट यू फास्ट गो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया? एक साथ है और फास्ट बोलना है, फास्ट बोलना। इस बार जो नहीं बोल पाए तो आउट हो जाएंगे। क्लियर है? लास्ट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है? रेडी? यस 1 2 3 4 5 6 7 आउट। चलिए एक लास्ट, अब इस बार जो आप बोलेगा लास्ट यस 7 9 10 इतना तेजी 1 2 3 4 यस 1 2 3 4 5 7 8 यस 9 आउट। दोनों में होगा, एक साथ में बोलो। यस 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 1 2 3 अरे सर एक सर बोल रहा है नंबर चेंज हो गया सर, नंबर चेंज हो गया। आप नंबर चेंज अब इतना ही होगी, इसी में बोलना है। 10 नहीं जाएगा नहीं तो कौन हो जाएगा? कौन आएगा? 1 2 3 4 5 6
कर दे जल्दी जल्दी 3, 4, 5, 4, अब चेन 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 चल yes start 1 1, you're 1, 3, 4. People are out. yes 1, 3, okay thank you 1. ये चार लोग ऊपर समझिएगा In your class, wait and yes the purpose of the gaming is what you have to interact all the students only through this in between the session if you interact like this such small game or small things or activity based learning your classroom will be more effective and students will get listen to you very carefully that is the purpose don't make the students in the process of only just there are two types of learning process first is student centric and second is teacher centric so which you have to student or teacher which segment you have to student centric or teacher centric student centric because teacher centric if you take only teacher centric you will deliver the lecture and they will only listen the communication gapping is there and no one is able to that also so don't bother your teaching through teacher centric be the learning process in student centric means 40 minutes you are assigned for one class means 40 minutes is completely interacted the session will totally interact with students either in the form of activity or any purposes so that means the real fruitful session and if you prepare like this type of learning outcomes in your classroom definitely your class will be here in colleges like what was there all of us have attended the college like what was that if a teacher or a professor is expert and fruitful effective his or her routine was the last period 2:40 to 3:20 कॉलेज में क्या होता था जो सबसे अच्छे प्रोफेसर होते थे उनकी क्लास सबसे लास्ट में लगे क्यों ताकि बच्चे एक लेक्चर को सुनने के लिए जो अदर के बॉडी क्लास है उसको भी वो ग्रुप करके सुने अदरवाइज क्या होगा शुरू में क्लास लगा देंगे बच्चे क्लास करते हैं वो तो बेकार आते हैं चलो घर बंद करते हैं तो हमें वैसा टीचर बनना है कि बच्चा हमें सुनने के लिए राजी है वो हमेशा कॉन्शियस रहे कि फलाने सर का फलाने मैम का भी क्लास है और अच्छे से करें लोग कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस होने चाहिए क्लास में How many of you favor pin drop silence in the classroom? Please raise. Those you want pin drop silence in each classroom. Please. उठाइए आप जो लोग चाहते हैं कि हमारा क्लास पिन ड्रॉप साइलेंस हो दो बार उठा लिया इधर से कोई नहीं उठाया Is it possible to have the pin drop silence? No man. And if you want your class is not effective, interaction is there. And if interaction is there will the purpose is what? What you want to exactly learning process among the students. That is the purpose. And already you have seen the picture class of rowdies. How the rowdy changes into real students. One more thing for primary section, there is no any means of having finishing your all chapters. No need. The purpose is what are the things you want to inculcate in the minds of the students. That is the purpose. No means that if you have unable to finish one or two topics in the whole curriculum, then you have no problem. But if your teaching outcomes, your learning outcomes is 80% plus successful, your total teaching is successful. Not because what we have to make the students in the learner process, not the whole process. Got it? Next.
Important points to remember. First is every activity should have an accessible tool. Tool is there. Do not forget to keep evidence of activity. If you does any activity in your classroom, you must have the record of activity that can you show to the principal and other resource. Third, the assessing parameters should be discussed with the students when activity is given. Any activity is assigned by you to the students, you must have to brief before starting the activity. That is the purpose. Next. Now, documents for assessment, assessment of activity, report of activity and other evidence. Assessment means record of assessment and review. Report means introduction, objective, preparation, students' participation and what are the procedure. Other evidence it may be in the form of the photographs, project file, PPTs, models, charts, math work, video. Simply think, suppose that I am the lecturer here and you are the listener, you are listening my lecture, okay? Same thing if you have enough students also, that 2 students will prepare this topic in the form of the PPT and you have to just share your ideas to the whole class through your PPTs. What is the effectiveness in that PPTs? 2 बच्चों को आपको अपने कल की क्लास के लिए मॉनिटरी के लिए असाइन किया, जैसा कि क्या देखा राउडी मैम ने क्या कहा मैं क्लास नहीं लूंगी, हर दिन 2 बच्चा कभी क्लास करेगा। मैंने कहा ना वो बच्चे कितने खुश हो गए और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने जितना अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करना था वो दिया। वैसे ही जब हम एक स्टूडेंट को टीचर का रोल जब देते हैं ना तो क्या करता है, अब उसके दिमाग में है कि आज का मैं टीचर हूँ स्टूडेंट नहीं हूँ, तो उसको अपने अकॉर्डिंग को तैयार कर। सपोज है अभी मैं कहूँगी कल आपको पीपीटी रेडी करके लाना है यहाँ बोलने के लिए 5 मिनट, तो आपका माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाएगा कि अब हमको एज ए लेक्चरर एज ए डिलीवर्ड लेक्चर के रूप में यहाँ देना, तो हम उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे, तैयारी करेंगे। सेम जो है इससे क्या फायदा है, बच्चा इतने अच्छे से तैयारी करेगा कि वो कभी उसको भूलेगा नहीं, माइंड से बोलेंगे मुझे ऐसा करना है। तो हम लोग को क्लास में इस तरह के बच्चों को टास्क दे करके आपको तैयार करना है। जैसे एक सुझाव दे रहा हूँ, भले मानना हो तो माने नहीं माने, लेकिन मेरा अपना पर्सनल सुझाव है, आप करेंगे तो बहुत सारे जो डेवलप्ड स्कूल है चाहे दिल्ली वगैरह में चाहे फॉरेन में, तो क्या करते हैं कि एक आदमी को एक मतलब 15 दिन पे किसी भी एक टीचर को मास्टर ऑफ द डे बनाते हैं, मतलब प्रिंसिपल ऑफ द डे। क्या इसका बेनिफिट हो सकता है, एक दिन के लिए आपको मैंने प्रिंसिपल बना दिया, क्या करें? One day CM. Okay, sir. Suppose that I have to give one day. First of all, दुनिया में कानून आपको सुधार दूंगा। Second, एक हमारा स्टूडेंट go to pavilion back home. But teacher is coming late, go to back home. Suppose that रोज टीचर फोटो वहाँ सामने से ले लीजिए, कराते डिलीवर कर और है ना ये नो टीचर because a student not power to the teacher and teacher is not power to the student. So how can teach? How can give the student? बहुत साइंस में होता है नियम कानून। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए मैथ साइंस से किसको बनाना है प्रिंसिपल, आपको बना दिया प्रिंसिपल, आप क्या करेंगे? आइए
Please come. Please come. What improvement you need to change in one day? Please come. Yes. According to what are the things you have to keep in your mind that for one day principle, how can you change some things? Yes, please. Going to teach at every floor to see the classroom. Are the students happy? Learning or not? Second, one day Anybody wants to say it? Anybody? और कोई है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? नहीं। Yes, yes, yes. First of all, I would love to know the real face of Etika. How many of you will like me and how many of you will hate me? This is the first thing. Thank you so much. और कोई? Yes. पढ़ाई बंद करवा देंगे और पिकनिक ले जाएंगे फ्रेश हो जाएंगे सारे टीचर्स वन डे पिकनिक पटना और बढ़ेंगे First of all, I will reduce the burden of exam. I feel whole year we are giving exam. Students are also feeling burden. So, like back days, I will reduce the exam pattern. Thank you. चलिए सबने अपने अपने बातें कर दी। अब मेरा पर्पस क्या था वहाँ जब प्रिंसिपल बनाने का उसको ध्यान दीजिए। जनरली अगर कोई प्रिंसिपल 10 साल 15 साल 5 साल 2 साल से लगातार उस देता है तो वो बहुत सारी बातें हैं जो उसके दिमाग में नहीं आएंगी, जो किसी को अगर एक दिन के लिए असाइन करेंगे तो वो नया चीज करके उनकी बातें क्यों, क्योंकि उसका माइंडसेट है पर हैबिचुएटेड है कि ये हमको ये करना है, प्री डिफाइंड ऑल थिंग्स है। लेकिन जैसे एक नए आदमी को हमने मौका दिया वो क्या करेगा, कुछ ऐसी बातों को सर्च करेगा जहां हमारा ध्यान जरा नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि हम उसके हैबिट में। तो एक अलग कॉन्सेप्ट देने से फायदा यह होगा कि जैसे सर तो सर ने कहा एग्जाम को पढ़ करूंगा, सर ने कहा कि ले जाऊंगा, तो ये नए चीजें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पूरे एकेडमिक जहां पर हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है। वो चीजें जो है हम नए तरीके से कर सकते हैं। तो ये नए कॉन्सेप्ट जब हम खुद अपने आप इम्प्लीमेंट होता क्या है कि हम लोग अभी भी पैटर्न को ना छोड़ना, जो हमारा हैबिचुअल पैटर्न है उसको फॉलो लगातार करना, नया कुछ ऐड करने की नहीं जरूरत, कुछ नया समथिंग न्यू क्रिएट कीजिए और इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी अगर आप लागू करते हैं, सेम स्थिति आप प्रिंसिपल नहीं कर सकते हैं। क्लासरूम में देखिएगा बच्चों को आप जैसे आपके हेड बॉय हेड गर्ल है वैसे क्लास में मॉनिटर भी है। आपने से ये बताइए कि जैसे बच्चे बाहर जाने के लिए परमिशन आते हैं ना, नहीं गो आउट सर, उसके लिए क्या करते हैं? कोई नया तकनीक अपना सकते हैं उसके लिए नया चीज, ये तो पुराना नेशनल में है, गो आउट सर छुट्टी दे दी है। कुछ ऐसी नई चीजें जो आपके दिमाग में बताइए, कुछ ऐसा आप कर सकते हैं? यस, एक अवसर पर ट्रेडिशनल हो गया, कुछ उसमें हम नया कर सकते हैं क्या? सोचिए, थिंक कीजिए, बस खाली बैठने से नहीं, कुछ क्रिएटिविटी को थिंकिंग करिएगा। द मोर यू थिंक द मोर यू लर्न। अच्छा चलिए, अगर मैं को आउट को हम फॉलो करते हैं तो उसके क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं? ड्रॉबैक्स बताइए, मैं आई गो आउट के क्या क्या ड्रॉबैक्स हो? कोई नहीं ड्रॉबैक हो सकता है कि नहीं? हाँ सर, पता नहीं चलेगा क्यों बाहर। और कुछ इसके अलावा गैदरिंग सबसे ज्यादा होगी। अगर एक क्लास में अगर एक बार में जैसे अगर नर्सरी से लेकर के और 12 तक का स्कूल है, हर क्लास में अगर दो बच्चे कंटिन्यूअस बाहर निकल गए, एक साथ कितने बजे गए? 30 स्टूडेंट्स बाहर निकल गए, तो एक साथ 30 गए, फिर 5 मिनट के बाद फिर 30 गए, फिर 15 फिर 30 गए, तो क्या होता है? कॉरिडोर में गैदरिंग जो हमेशा लगी रहती है, ऐसा हो सकता है?
इसको कैसे हम रोक सकते हैं और हमारा काम भी हो जाएगा। उसको हमें रोकना भी है और बच्चों को मना भी नहीं करना है। वो कैसे रोक सकते हैं? Break after 3 periods. कैसा? 5-10 minutes break after 3 periods. 3 पीरियड्स के बाद ब्रेक। चलिए ये भी एक कॉन्सेप्ट है। और कोई कॉन्सेप्ट दिमाग में कुछ है? सोचिए थोड़ा सा। ठीक, While you're doing it, go out from the class, then because you are interested to go out from the class. चलिए सिंपल एक हमारा कॉन्सेप्ट हमने अपने विद्यालय में लगा रखा, बता रहा हूँ। हमने क्या किया कि नर्सरी से लेकर के और 12 तक के बच्चों के लिए आउट पास बनवा दिया। आउट पास, ठीक है। आउट पास बनाने के बाद मॉनिटर को दे दिया गया है, जिस बच्चे के पास आउट पास गले में लगा होगा वही बच्चा कॉरिडोर में दिखना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर है भाई आउट पास नहीं रहेगा, बाहर जाएंगे तो हम पकड़े जाएंगे। तो नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स जो गैदरिंग कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, वो कंट्रोल हो जाएगा आपका, और लिमिटेड लोग जो है वो बाहर जाता है। करना कुछ नहीं है, सिंपल एक आउट पास का बना करके और मॉनिटर को डाल। तो नए नए चीजों को हम कुछ ऐड कर करके ना एक नया इफेक्टिव चीजों को हम क्रिएट कर सकते हैं। पर्पस ये कोई जरूरी नहीं जो हम फॉलो करें अभी फॉलो करें। मेरा जो मानना हमें बता दिया कि पर्पस ये है कुछ नया करें, और नया में बच्चों का ही तो, मैनेजमेंट का ही तो, स्टूडेंट का डेवलपमेंट हो, ये क्रैश नहीं करना चाहिए। इसका को बिल्कुल ध्यान रखना है। एक मिनट सर। हाँ सर। आप कहें कि आप पास देना चाहिए, अगर सपोज रेगुलेटर अदर स्टूडेंट आउट पास देते हैं इसको तो कीजिएगा। मान ले जाए तो आउट पास का आप, अगर मान लें कि रेगुलेटर आउट पास होना उसमें भी नहीं दे रहा है, नहीं देगी, पर ये तो आपको आगे चल के तो दिक्कत होगा कि बाहर नहीं जाए तो फिर नहीं। ऐसे जब वो एक गया तभी दूसरा जाएगा। मेरा पर्पस ये है कि एक बार में जो और बाहर निकलते हैं बहुत ऐसा स्टूडेंट ये हमारे गया देखो बात करने के बाद कोई मांगा उस स्थिति में क्या करना पड़ेगा। उस स्थिति में कर इस पे आप कुछ कर सकते हैं। अपन लोग निवेदन न कर रहा है नहीं देगा तो हमको मिलेगा तब उसके क्या प्लीज, अगर जो लोग अभी भी बच्चों को क्लास में छड़ी से पीट रहे हैं, कॉर्पोरल पनिशमेंट इज टोटली प्रोहिबिटेड फ्रॉम द एसटीडीएसी। आपको बच्चों को नहीं मारना है। अगर आप इस चीज का यूज कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, बिल्कुल पनिशमेंट नहीं करना है बच्चों को। आपको बच्चों को ऐसा ही डंस करना, थोड़ा समय लगेगा सर। बच्चे रिमोट एरिया के हैं, प्रॉब्लम चैलेंजिंग है, मैं आपके बात से सहमत हूँ, लेकिन धीरे धीरे उन बच्चों को, जब हम राउडी को स्टूडेंट बना सकते हैं तो किसी कुछ कर सकते हैं। तो हमारे को भी पता था कि हम कैसे बच्चों को ले आप करें कि जब तक का और जब तक वो है जब तक बच्चा को स्टूडेंट को अगर आगे का नहीं बताया नहीं जब तक नहीं देगा वो स्टूडेंट तक नहीं पढ़ सकता। अब आपको वैल्यू भी नहीं देगा। इसलिए पर है स्टूडेंट नहीं समझेगा इसका तो बोल दिए खाना नहीं किए तो बस बनाए या ना बनाए इससे कोई सब कुछ बोलने नहीं चाहिए। आज डॉक्टर दरबारी का टीचर तो देख नहीं सकता है तो उसको तो आप मन ऊपर हो जाएगा, बनाए तो ऊपर भी ना बनाए तो ऊपर भी, तो ऊपर की बात सही है। उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा? इस स्थिति में सर आपको सबसे ज़्यादा जरूरत है एथिक्स एंड इंटीग्रिटी के लेसन की। अगर यही अगर करते रहेगा तो स्टडी कैसे करेगा, कैसे बताएगा? यही चीज करते रहेगा तो कोर्स भी पूरा करना है, तो यही अगर काम करते रहेगा तो स्टडी कैसे पढ़ाएगा? आगे बताइए। यहाँ दबाव है कि कोर्स पूरा करना है और यहाँ आप नहीं करवाइए वो करवाइए, कैसे काम होगा? आगे बताइए। वन डे प्रोसेस नहीं है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। आपको एक दिन में ये कंप्लीट आप नहीं कर सकते। मेरा पर्पस है कि आप
वो धीरे धीरे बच्चों को, जो जैसे उस राउडी बच्चों को उसने क्या किया, सिंपल ड्रेस में दिए, बच्चे सुधर गए। वैसे ही बच्चे जो ऐसे हैं एक टीचर ने 12 बच्चों को परमानेंटली हमने ऐसे मॉडरेटर फिक्स कर दिया है। उस 12 बच्चे का नर्सरी वो टीचर होल एकेडमिक ईयर करेगा। कुछ भी होता है तो अब जैसे क्लास टीचर आप रहते हैं ना, तो क्लास टीचर के अलावा एक मॉडरेटर कोर्स सिविल से क्रिएट किया है, जिससे आपको बच्चे का एक एक चीज की जानकारी होनी चाहिए कि ये बच्चा क्या चाहता है, क्या है। चीजें तो बहुत कुछ है, करना नहीं चाहिए। उसके लिए हमें लगना होगा हमारा पर्पस क्या है। हमारा पर्पस है 9 to 2, 9 o'clock एंट्री किया, 2 बजे करना है। अपना भी पर्सनल लाइफ है, लेकिन अगर आपने इस प्रोफेशन को चुना है तो डेडिकेटेड होकर काम करना पड़ेगा। और एक दिन वन डे प्रोसेस ये नहीं है सर, थोड़ा समय लगेगा। There is a case in Mumbai High Court. One British teacher has punished this student, and guardian has filed case against that British teacher. After 3 months, sir has given decision. Teachers can punish the student slightly, in light way, to improve the students, not violently. So don't fear about it. Now, light punishment we can give, because High Court, Mumbai High Court has given decision. सर ने कहा मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अब सर ने कहा कि इसका ठीक तरीका कोई जो नहीं, जो छड़ी से मारे कोई पर सबसे बेस्ट तरीका है सर, उसको फिजिकली हरास कर दीजिए। 100 बार उठक बैठक करेगा अपने आप के लिए, जहाँ दर्द करना शुरू करेगा अपने आप को। तो बहुत सारे तरीके हैं पनिशमेंट करने के। ये जरूरी नहीं है कि हम छड़ी से ही मारेंगे तो ही बच्चा जो है वो डरेगा। गार्जियन गार्जियन बाहर करेगा सर, गार्जियन सर तरीका थोड़ा सा चेंज करके हमको वो ट्रेन करना है।